So we'll review the Greek and Aramaic, the Aramaic and Hebrew, because that's two languages at once. और हम अभी जो है अरामी और अब्रानी जुबान करेंगे क्योंकि दोनों जुबानें जो हैं इनके अंदर जो है वो तकरीबन एक जैसी हैं. And we will do the consonants, which I don't think is much of a problem as the vowels. So let's review these. और हम जो है कॉन्सोनेंट्स देखेंगे और उसके बाद वॉल्स देखेंगे. मैं नहीं समझता ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप इसको जो है करने की कोशिश करें. The first letter, of course, is Aleph. और आप सबको पता है कि जो पहला जो लेटर है वो है अलिफ. And Aleph is a consonant that you make, the stopping of the air that you make whenever you say a vowel. और जो अलिफ है वो एक ऐसा जो है कॉन्सोनेंट है जब भी आप कोई वावल यूज करते हैं आप उसको खास तौर पर इसका अपना कोई जो है आवाज नहीं है लेकिन इसके साथ कोई ना कोई वावल लगा के आप आवाजें जो है वो पैदा करते हैं. O, E, A. At the beginning of each of those, you're cutting off your breath. जैसे आप बोलेंगे ओ ई ए तो आप जब इसको बोलना शुरू करते हैं तो आप एकदम अपना सांस रोकते हैं फिर आप बोलते हैं ए ओ ई. That's the sound that the Aleph makes. और यही वाले वो जो आवाजें हैं वो अलिफ जो है वो हमें निकालने में मदद करता है. Which of course you have Aleph in Urdu, right? Yeah, you know what an Aleph is. और अलिफ आपके पास उर्दू में भी है और आपको पता है कि अलिफ क्या है. Now, these two letters are actually the same letter. और ये जो दो लेटर्स हैं ये एक जैसे लेटर हैं. And it's the letter Beit. और इसको बोलेंगे बेत. And if it has the dagesh, which is that dot, it's a B sound. और इसके अंदर अगर नुक्ता हो जिसको हम दागेश कहते हैं तो इसका जो साउंड है वो ब होगा. And without the dagesh, और जब दागेश ना ही होगा it's a V sound. तो इसका जो साउंड है वो व होगा. B and V. But they are the same letter. और ये लेकिन ये ब और व जो है ये एक ही लेटर है. They do not make a different word. और इनसे कोई दूसरा जो लफ्ज है वो नहीं बनता. It's just that whenever this letter has a vowel in front of it, notice I'm pointing to the right of it, it does not get the hard sound, it gets the soft sound. और जब भी ब के सामने जो है वो वॉल होगा तो ये हार्ड साउंड जो है नहीं देगा बल्कि बहुत सॉफ्ट साउंड देगा. So bait, B or V. और ब और वा और इसको बोलते हैं बेत. Same situation here. दोबारा यही सिचुएशन जो है वो आगे वाले लेटर में है. With the dagesh and without. दागेश के साथ और दागेश के बगैर. With the dagesh, it used to be G. जो दागेश के जो बगैर है इसको हम ग कहते थे. And without it, it was G. और जब इसके अंदर दागेश जो है वो नहीं होगा तो ग. But today, they're both pronounced like it's hard, G. लेकिन आजकल जो है इसको जो है हम ग बोलते हैं. दोनों को एक ही तरीके से बोलते हैं. And this letter, it's that little tail that distinguishes it from other letters. और आप ये देखें कि इस लेटर के अंदर आप देखें कि छोटा सा जो है वो बाहर की तरफ जो है एक उसकी दुम निकली हुई है नीचे. And the name of the letter is Gimel. और इस लेटर का जो नाम है वो गीमल है. The next letter, again, the same situation, with a dagesh and without. Same letter. और आगे जो लेटर है वो भी सेम सिचुएशन है. और आप देखिए एक के अंदर नुक्ता है जिसको नुक्ते को दागेश कहते हैं
दागिश के साथ और दागिश के बगैर। With the dagesh, the hard sound is duh. और दागिश के साथ जो हार्ड साउंड है इसको हम ड बोलेंगे। And today they pronounce the one without the dagesh the same way. लेकिन आजकल जो है जब ये दागिश के बगैर रहता है तो इसको इसी तरीके से जो है बोला जाता है। But it used to be that this was pronounced different. It was the. लेकिन जो है मसीह के ज़माने में जो है पहले जब इसके अंदर दागिश नहीं होता था तो इसको द बोलते थे। But today they're both duh. लेकिन आज जो ये दोनों हैं वो ड है। Now, the name of the letter is Dalit. और इस जो लेटर का जो नाम है वो दालित है। Now, this letter, you have to notice that it goes past the vertical stroke. It goes just past it. और आप ये देखें कि ये जो लेटर है ये जो एक जो सीधी लाइन है उससे बाहर की तरफ पीछे की तरफ निकला हुआ है। And that's how you can distinguish it from this letter. और इससे हम जो है वो रेश से जो है इससे हम मुख्तलिफ ये देखें रेश जो है वो मुर्दा है लेकिन जो दालित है वो पीछे की तरफ जो है वो निकला हुआ है। So the Dalit goes past the vertical. और जो दालित है वो जो एक लाइन है उससे पीछे की तरफ बाहर निकल जाता है। Okay. Next letter is just hey. और जो आगे वाला लेटर है ये ए है। And it's pronounced. और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। It's the first sound in its name. Hey. और इसका जो साउंड और नाम है वो ए है। Right. This letter is Vav. और जो आगे लेटर है ये वाव है। Now it used to be pronounced like a wow in Arabic, a wa sound. ये इसको हम पहले जो है जैसे अरबी में उर्दू में वाव का साउंड है तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ते थे वाव। But today it's pronounced va. लेकिन अभी इसको जो है अबरानी के अंदर व पढ़ते हैं। So it's pronounced exactly like this one. और ये बिल्कुल इसी तरीके से बोला जाता है जैसे हम पैच के अंदर बगैर दागिश के पढ़ते हैं। Va. व। Now, look at these two letters. They're very similar. और आप आगे देखेंगे जो दो लेटर्स हैं ये काफी जो है एक तरह के हैं। And this one, the head is actually written at an angle. और आप देखिए जो ऊपर इसके जो लाइन लगाई गई है इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके और पीछे की तरफ बाहर निकाला गया है। And it goes past the vertical. और ये वो जो एक सीधी लाइन है इससे पीछे की तरफ बाहर आया हुआ है। Whereas this one just curves down. लेकिन ये देखिए ये जो वाव है ये सिर्फ थोड़ा सा जो है एकदम नीचे की तरफ को मुड़ गया है। This is it's the name of the letter is Zion. और इस लेटर का जो नाम है वो है ज़ाइन। And it's pronounced as a Z. और इसको ज़ के जो आवाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। Next letter is Het. और जो आगे वाला लेटर है वो है खैत। And it's pronounced in the throat. और इसको हम गले में बोलेंगे। And notice the difference. The hey does not touch the vertical. This one does. और आप देखिए खैत और हे के दरमियान जो फर्क है और फर्क ये है कि जो हे है वो ऊपर वाला जो है उससे उसके साथ टच नहीं कर रहा लेकिन जो खैत है ये जो है वो सब मिले हुए हैं। Het. बोलेंगे हम खैत। Notice it's basically three sides of a box. आप ये देखिए कि बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक बॉक्स आपने बनाया है और उसकी एक जो साइड है वो नहीं। The letter Tet, और उसके बाद जो लेटर है वो है टेक। which you have in Urdu, that sound. और आपको पता है कि उर्दू में भी ये वाला साउंड है जैसे तोता है जिसके लिए हम यूज करते हैं यूज। There's the name of the letter, Tet. और इस लेटर का नाम जैसे हमने देखा भी टेक है। And then Yod, और उसके बाद योद है। the smallest letter in the Hebrew alphabet and the Aramaic alphabet. और अरामी और
अब्रानी के अंदर ये सबसे छोटा जो है एक अल्फाबेट है. Okay, it's the Y in English. और इंग्लिश के अंदर जो है इसका जो साउंड वाई है, It's a Y sound. तो इसको ये जो साउंड है वो इसका होगा. And here's the name of it, Yod. और इसका जो नाम है वो योद है. There it is. Now, this letter is Kaf. और आगे जो लेटर है इस ये है काफ है. जैसे हमारे पास भी काफ है ना, लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाता है. That's the way it's written. Now, it has the dagesh and without the dagesh. और ये काफ है, इसके अंदर दागिश के साथ भी होता है और बगैर दागिश के साथ भी होता है. And this is just K. You have the sound in Urdu, Ka. और ये जैसे कुत्ते का साउंड है, ये वही वाला साउंड है, क. And this is, it's pronounced in the same place in the mouth. It's a Ch sound. लेकिन इसको हम ख साउंड बोलेंगे. जब इसके अंदर दागिश नहीं होगा तो ये ख साउंड होगा. And they do make the distinction today. और आज भी इसको हम अलग-अलग पढ़ते हैं, क और ख पढ़ते हैं. Now, distinguish this in the mouth, Ch, from this one in your throat, Ha. और आप देखें जो खत का है वो अपने गले से आवाज निकालनी है, ख. लेकिन जब काफ आएगा दागिश के बगैर तो आपने अपने मुंह से आवाज निकालनी है, क. And this letter is written differently when it's at the end of a word. और लेकिन जब भी काफ किसी भी लफ्ज के आखिर में आएगा तो वो उसकी सफीद फॉर्म उसको कहते हैं, उसके साथ आएगा. और फिर ये कर्व नहीं होगा बल्कि एक लंबा जो है वो लंबा नीचे की तरफ एक लंबा डंडा बनेगा. Now, it too can still have the dagesh or not have the dagesh. और जो सफीद फॉर्म है, जो फाइनल फॉर्म है, उसके अंदर दागिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. And by the way, this was the original form of the letter. और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल फॉर्म है इस लेटर की. It's just when scribes were writing, they dragged their pen as they went to the next letter, and it kind of just picked up the tail. और दरअसल जो था ये पहले जब काफ था, काफ था तो ये नीचे की तरफ लंबी लाइन थी. लेकिन जब इसको हाथ से लिख रहे होते थे तो वो उस जमाने में कोई मशीन वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो हाथ से लिखते थे. तो हाथ से लिखते वक्त जो है वो इतनी तेजी से लिखते थे कि वो जो लंबा डंडा नीचे की तरफ लेके जाने की बजाय जब अगला उन्होंने हिस्सा लिखना था तो उसके साथ ही उसको मिला देते थे. तो उस वजह से इसकी जो एक शेप है वो नई डेवलप हो गई. Now, all of these are the same letter. और ये जो सब लेटर्स हैं ये एक ही जैसे लेटर्स. Lamed. और ये है लामिद है, जैसे हमारे पास लाम है. That's the way the letter name is written, Lamed. और ये इसका अब्रानी के अंदर इसको जैसे लिखते हैं वो लामिद लिखा हुआ है. It's just La. और इसका ये ला का साउंड है. And then Mem, और उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास मेम है. and it has a final form. और इसके बाद इसकी जो है वो फाइनल या सफीद फॉर्म है. Now, students sometimes confuse this letter with this letter. कई दफा जो है हम टेट को और मेम को आपस में मिला देते हैं, लेकिन ये अलग अलग है. आप इनकी बनावट देखिए दोनों की तो मुख्तलिफ है. Mem, just the M. और ये मेम है ऐसे जैसे कि मीम है. And it has a final form, और ये इसकी फाइनल फॉर्म है. which is just a box. तो फाइनल फॉर्म है बिल्कुल एक बॉक्स की तरह है. Now, Noon उसके बाद हम देखते हैं कि नून है. has a final form where you just drop it. और उसके बाद इसकी फाइनल फॉर्म है. फाइनल फॉर्म ये कि आप इसको नीचे की तरफ लंबा ले जाते हैं. Again, this was the original form. और ये एक उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी. And then they dragged the tail and made the form within a word. और जब स्क्राइब इसको लिख रहे होते थे जल्दी के साथ तो वो नीचे ले जाने के बजाय जब अगला हिस्सा लिखना शुरू कर रहे थे तो उसको टेढ़ा कर देते.
And you can see it over here within a word and at the end of a word. उसके बाद आप नून को देखते हैं कि जब भी किसी लफ्ज के आखिर में आएगा तो ये नीचे की तरफ लंबा होगा, और अगर दरमियान में या शुरू में आएगा तो ये हल्का सा टेढ़ा होगा. Some people confuse this letter with a gimel. कुछ लोग जो हैं वो नून और गीमल को आपस में मिला देते हैं. Remember that's that little tail that makes the gimel the gimel. आप देखिए कि जब हमने गीमल सीखा था तो बताया मैंने अभी आपको कि इसके नीचे एक दुम जो है वो निकलेगी. Okay. And that's just the N sound. और ये जो है इसका जो साउंड है नून का वो एन के लिए है. Okay. Samic, उसके बाद सामिक है, it's just an S. ये एस का साउंड देता है. And it's basically a circle with a flat top. आप ऐसा ही है कि आप एक सर्कल बनाएं, लेकिन जो सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा है वो आपने गोल नहीं बल्कि सीधा बनाना है और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देना है. Ayin, और ये बिल्कुल वैसे हमारे पास जैसे आयन है, ये हमारे अंदर अबरानी के अंदर आयन है. and it's pronounced in the throat. और इसको हम गले में बोलते हैं. And some people pronounce the ayin और कुछ लोग जो है वो आयन जो है like the het, but voiced using their vocal cords. और लेकिन वो खत की तरह इसको जो है वो पढ़ते हैं और अपने वो गले के जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए इसकी आवाज निकालते हैं. This is called an unvoiced consonant. You don't use your vocal cords. लेकिन ये जो खत है इसके लिए आप वोकल कॉर्ड नहीं यूज करते. But the ayin, you do use your vocal cords. Ayin. लेकिन जब आप आयन बोलेंगे तो तब आप अपने जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो यूज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन खत जब आप बोलेंगे तो फिर नहीं. So voiced, ayin. आयन. There's the name written. आप ये देखिए इसका नाम लिखा हुआ है और आखिर में आप देख सकते हैं कि नून जो है वो नीचे की तरफ लंबा आया हुआ है. Now, the word ayin is the name of that letter. It's also the word for eye, और ये जो as in what's in your head. इसको एन I will explain it to you. और ये जो आयन जो है ये जो है आंख, जो अबरानी में आंख को आयन कहते हैं. जैसे आप देखिए हमारे पास जो एक लफ्ज है एनक, तो ये उसी के साथ ये मिल रहा है सारा कि आयन एन और आंख को कहते हैं. आयन जो है वो एक जो है वो जो अबरानी की हुरूफ तरजीह का हिस्सा है और एनक का लफ्ज आप देख सकते हैं किसी से निकला है. It used to be written, it was drawn like an eye. It was a circle with a dot in the middle. और पहले इसको जो लिखते थे तो एक बिल्कुल ऐसे लिखते थे कि एक गोल सा सर्कल बना के उसके अंदर डॉट लगा देते थे. So it looked like an eye. ताकि एक आंख की तरह, जैसे एक आंख होती है ना, एक आंख की तरह इसको लिखते थे. लेकिन अभी इसको इस तरीके से. Now, these three are the same letter. और ये आगे जो हम देख रहे हैं ये तीनों जो है वो एक ही लेटर है. Okay? You have a form with daggesh, without, and you have a final form. आपके पास दागिश के साथ, दागिश के बगैर, और उसके बाद आपके पास फाइनल फॉर्म. Don't forget, the final form can have a daggesh. और आप ये हमेशा याद रखें कि हर एक जो फाइनल फॉर्म है उसके अंदर दागिश भी हो सकता है. Alright, so with the daggesh, it's pa. जब इसके अंदर दागिश होगा तो इसको हम पा बोलेंगे. And without, it's fa. लेकिन जब दागिश नहीं होगा तो ये फ होगा. In English, that's a P and an F. और इंग्लिश के अंदर इसको पी और एफ जो है इस साउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं. There's the name of the letter, pe. और इस लेटर का जो नाम है वो पे है. Now, I'm going kind of fast because we've been doing it for several weeks. और मैं थोड़ा जल्दी से इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिर्फ आपके साथ मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है और काफी दफा हमने इसकी प्रैक्टिस भी की है. We're just reviewing. अभी हम सिर्फ इसको रिव्यू कर रहे हैं. The next letter, you have a final form, और जो अगला लेटर जो है आप इसकी फाइनल फॉर्म देख सकते हैं, which was the original form. और जो सबसे पहले ये लिखी जाती थी. And
And notice how they drag the tail when they had a letter following it. और जब आप देखें कि जब आप उसको जल्दी से लिख रहे होते थे अपने हाथ से तो उसकी जो सीधा लिखने की बजाय इसको टेढ़ा जल्दी से लिखते थे ताकि आगे वाला जो लफ्ज है वो लिख सके. The name of the letter is Sadeh, और जो इस लेटर का जो नाम है वो सदे है. and you have that sound in Turkey, right? जैसे जैसे सादिक जो होता है या सादिकाबाद तो वही साउंड है सादिक स्वाद का. This letter, Kof, उसके बाद कोफ है. technically pronounced in the back of the throat, whereas the kaf is pronounced in in the back of the mouth, whereas the kaf is pronounced in the middle of the mouth. जैसे हम काफ जब बोलते हैं तो हम अपने मुंह के दरमियानी हिस्से को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम कोफ बोलेंगे तो हमने पीछे वाला जो आपके जो मुंह का पीछे वाला हिस्सा है तो उधर से ये आवाज निकालेंगे. ये कोफ. You often know that you can't tell the difference. और ये जो है काफी आवाजें मिलती हैं, इसलिए इसको जो है बड़ी मुश्किल से आपको ये जो है आवाज को देखना पड़ता है कि कोफ है. Alright, so just ka. और इसकी जो साउंड है इसका का. Resh, और उसके बाद रेश है, जैसे हमारे पास उर्दू में आर है, सॉरी वो रे है. and notice the smooth part there, और आप ये देखें कि ये एक कर्व हो रहा है स्मूथली. whereas the dalit went past. लेकिन जब दालत लिखते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो पीछे की तरफ बाहर निकल जाता है. Okay, just to look at it again. Remember, this goes past. आप देखिए दालत के और रेश के अंदर जो फर्क है वो आप देख सकते हैं. So they're very similar. दोनों जो है बहुत ज्यादा सिमिलर. Last three letters. इसके बाद हम आखिरी तीन जो लेटर्स हैं उनको देखेंगे. Now these two letters are two different letters. और आप ये याद रखिए ये जो दो लेटर एक जैसे आपको नजर आ रहे हैं ये दो मुख्तलिफ लेटर्स हैं. The dot on the left is a sin. The dot on the right is a shin. और ये अगर आप लेफ्ट के ऊपर नीचे ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो ये सीन होगा, और अगर राइट के ऊपर लगाएंगे तो ये शीन होगा. Nothing, they understand that. Yeah. And then finally, tav. और आखिर में हम देखते हैं ताव. With a dagesh, without. और ये दागिश के बगैर भी है और दागिश के साथ भी है. Today they're both pronounced as a T. और आजकल इन दोनों को जब हम बोलते हैं तो टी की आवाज निकालते हैं. But it used to be without the dagesh, it was a tha. लेकिन ये पहले जो दागिश के बगैर होता तो ये आवाज निकालते थे. Right. So that's the consonants. तो ये सारे जो कॉन्सोनेंट हैं ये अभी हमने दोबारा इनको जो है वो रिव्यू किया है. But now I want to go over the names of the letters because they have the vowels, and we'll review the vowels by working on the names. और अभी जो है मैं अब्रानी के अंदर ये जो इनके जो नाम लिखे हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा. उधर से ही हम इनके जो वावल्स हैं वो भी सीखेंगे. Remember, this is an accent mark. आपको याद होगा कि जो ऊपर आपको एक हल्का सा जो है वो तीर का निशान की तरह नजर आ रहा है, ये एक्सेंट मार्क है. And it just stress that syllable. और ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि इस syllable के ऊपर जो है वो जोर लगाया जाए. If you don't have an accent mark, the accent falls on the end of the word. और लेकिन अगर आपके पास एक्सेंट मार्क नहीं दिया गया तो हमेशा अब्रानी के अंदर जो है वो आखिरी जो हिस्सा है उसके ऊपर जोर देते हैं. और जो सेलेबल है वो आप सबको पता है कि क्या है. सेलेबल ऐसे ही है कि जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर 3 सेलेबल है, पाकिस्तान. ठीक है, तो ये सेलेबल इसलिए आप ये लफ्ज जब बोला जाए तो आपको पता हो कि क्या है. जैसे मैं कहता हूँ खुदा तो 1 सेलेबल है. ठीक है, तो सेलेबल यही है कि कितनी दफा एक लफ्ज को हम बोलते हैं, यानी कितनी दफा वो जो है जैसे पाकिस्तान 3 सेलेबल है. ये भी अपनी याद है. All right, this vowel और ये जो वॉल है is an ah sound. और इसका जो साउंड है वो आ होता है. And the vowel is always pronounced after the consonant that it's written with. और आपको पता है कि वॉल्स जो है वो हमेशा कॉन्सोनेंट के बाद में उसको प्रोनाउंस करते हैं.
So this syllable would be a. और ये जो पहला syllable है वो है आ. The 3 dots in a triangle, और जब आप 3 नुक्ते आप देखते हैं जो एक ट्रायंगल की तरह लिखे हुए हैं e. तो इसका जो साउंड है वो ए है. It's going to be pronounced after the lamed, and the page going to be at the end of it. और इसको लामत के बाद हम उस वावल जो है ए को पढ़ेंगे और आखिर में हम देखते हैं कि पे है. So it's lamed, sagol, pe. तो ये लामत और ये जो 3 नुक्ते हैं इसका नाम सेगोल है और उसके बाद पे. So this would be left. तो ये लेफ्ट है. And then putting them together, a left. तो और अगर हम इनको इकट्ठा पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे आ लेफ्ट. तो आप देखें 2 इसके सिलेबल. And then we want to stress this one, so we say aleph. क्योंकि हमें पता है कि हमने जो पहला जो है इसको स्ट्रेस करना है तो इसको पढ़ेंगे आलिफ. Now this word only has one. Let me go back. A word has as many syllables as you have vowels. और जो वर्ड है एक जो लफ्ज है उसके अंदर जो है उतने ही सिलेबल होंगे जितने आप उसके अंदर वॉल्स देखेंगे. जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर आपको 2 वॉल्स नजर आ रहे हैं तो उसके 2 सिलेबल हैं. Yeah, so 2 vowels, 2 syllables. जैसे 2 वॉल्स हैं और 2 सिलेबल. This only has 1 vowel in it. और आप ये देखें जो अगले वाला है उसके अंदर सिर्फ 1 वॉल है. But that 2 dots side by side, don't confuse them with the 3 dots. और आप ये देखें कि ये 2 डॉट्स हैं. ये 3 नुक्ते नहीं है 2 नुक्ते. This is eh. जो 3 नुक्ते होंगे तो उसका जिसकी जो आवाज है वो ए होगी. This one is a. लेकिन जब 2 होंगे तो आवाज होगी ए. But this sometimes gets written with a yod after it. लेकिन जब भी ये लिखा जाता है तो काफी दफा इसके साथ योद लिखते हैं. हर दफा नहीं लेकिन काफी दफा जो है वो योद के साथ लिखा जाता है. To let you know that the vowel is in fact long. तो इसलिए ताकि आपको पता लगे कि ये जो वॉल है इसकी आवाज थोड़ी सी लंबी है. So this is actually a combination. Sere, it's the name of the 2 dots. और ये दरअसल जो है वो एक कॉम्बिनेशन है. ये जो 2 डॉट्स हैं इनका नाम है सेरे. And then the yod, so we call the combination sere yod. और जो आगे आप देखते हैं योद है तो इस कॉम्बिनेशन को हम काफी मर्तबा जो है वो देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं सेरे योद. So this yod does not get pronounced. और ये जो योद है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते. Because it's just telling you that that vowel is long. और ये योद सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो आपको बताए कि जिससे पीछे जो इसका वॉवल है वो थोड़ा लंबा जो है इसको प्रोनाउंस करेंगे. So how do you know when a yod is just telling you the vowel is long and when the yod is actually a consonant? और तब अगर ये केस हो कि अगर योद जो है वो कॉन्सोनेंट है तो तब आप उसको कैसे पता चलेगा कि ये लंबा है कि नहीं. If the yod doesn't have its own vowel sign with it, अगर योद के नीचे कोई भी वॉल नहीं है then it's just telling you the vowel in front of it is long. तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ योद इसलिए लिखा गया है क्योंकि इससे पीछे जो वॉवल है उसको थोड़ा सा लंबा करना. Arabic does the same thing. और अगर आप किसी को जो है वो अरबी आती है तो उसके अंदर भी यही फार्मूला इस्तेमाल होता है. So there's only 1 vowel. तो ये एक ही वॉवल है. And so this has the dagesh. और आपको पता है इसके नीचे अंदर जो है वो दागिश है. So it's a hard b. तो ये ब का साउंड है. And then combining it with the vowel, it's bay. और जब इसको वॉल के साथ कंबाइन करेंगे तो इसको बे बोलेंगे. And then we have the tav on the end. और आखिर में हमारे पास ताव है. Now the tav is preceded by a vowel. Remember, the yod is not a consonant; it's a combination, and the combination is a vowel. और आप ये देखिए कि यहाँ पर जो योद है इसके नीचे कोई भी वॉवल नहीं है तो इसलिए जो है ये पीछे वाला जो वॉवल है उसका कॉम्बिनेशन है. ये खुद कोई इसकी कोई अभी इसको सिर्फ लिखने की ये वजह है ताकि पीछे वाला जो वॉवल है उसका जो साउंड जो है वो थोड़ा सा लंबा करे. And because the tav is preceded by a vowel, it did not get a dagesh.
अब हमें ये पता है कि जब भी जो है ताव जो है वो किसी वॉल के साथ आगे नहीं आ रहा, यानी इसके पीछे कोई वॉल नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो दागिश नहीं दिखेंगे। Now, today it doesn't affect the pronunciation. अभी क्योंकि जो है हम इसको एक ही साउंड से पढ़ते हैं, इसके लिए इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। So this word is baked. तो ये जो लफ्ज है ये बेक होगा, And it's the name of that letter. और वो जो लेटर का जो नाम है इससे। Now, notice there's no vowel in front of the bake because there's no word in front of it. और आप ये देखें कि जो बेत के शुरू के अंदर जो पहले कोई वावल नहीं है, So therefore it got the dagesh. इसलिए इसके अंदर जो है वो दागिश लगाना जरूर था। Those 6 letters that get the dagesh do not get a dagesh if there's a vowel in front of it. हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी जो ये जो लेटर्स हैं जिनके अंदर दागिश आता है, अगर इनके शुरू में कोई जो है वो वॉल नहीं है तो फिर ये जो है ये दागिश लाजमी लेंगे। And because the word's by itself, there's no vowel in front of the bake. और आप ये देखें कि इससे पहले कोई भी वॉल नहीं है, Whereas the tav does have a vowel in front of it. लेकिन आप ये देखिए जब तव है तो उसके आगे जो है वो वॉल, उसके आगे जो है वो वॉल लिखा हुआ है, So it does not get the dagesh. इसलिए वो दागिश जो है वो नहीं लेगा। So no vowel, dagesh. Vowel, no dagesh. आप ये देखें, अब ये अपने ज़हन में ये फॉर्मूला रखना है कि जब वॉल नहीं होगा तो दागिश आएगा, और जब वॉल होगा तो दागिश नहीं आएगा। All right. How many vowels do you see? तो यहाँ पर आप कितने वॉल्स देख रहे हैं? Tell me. आप अपना बताएं कितने वॉल्स देख रहे हैं? कोई भी बोले। 2. Did you say 2? Yeah. Yes, that's correct. 2 वॉल्स आपको नजर आ रहे हैं। Remember, the vowels are the dots and other things that are around the letters, either on top of them or beneath them. और आपको Sometimes पता है beside them. कि जो वॉल्स हैं वो नुक्ते हैं जो नीचे या उसके ऊपर, और इसके अलावा जैसे ये टी का साइन है या सिर्फ एक लाइन जो है, ये सब इनको हम वॉल कहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं इस लफ्ज के अंदर हमें 2 वॉल्स नजर आ रहे हैं। So a dagesh, not a vowel. It's just a sign that makes the letter hard. लेकिन जब आप एक नुक्ता, एक लफ्ज एक हिस्से के अंदर देख रहे हैं तो वो जो है वो वॉल नहीं है, उसको हम दागिश कहते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो है थोड़ा सा उसको हार्ड बोला जाए। And the accent mark is also not a vowel. और जो एक्सेंट मार्क ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये जो तीर है, ये भी वॉल नहीं है, ये सिर्फ उसको जो है जोर देने के लिए उस जगह। All right. 2 vowels. So how many syllables do we have? और अगर 2 वॉल्स हैं तो फिर इस लफ्ज के अंदर सिलेबल्स कितने होंगे? That's right. 2. Correct. वेरी गुड, 2 ही होंगे। Notice the yod does not have a sign with it, और आप ये देखें a कि vowel sign. और आप ये देखें कि जो योद है इसके अंदर कोई भी वॉल साइन नहीं है। So therefore the yod is not a consonant. It's just telling you that that vowel is long. और इसका मतलब हुआ कि जब योद के नीचे कोई भी वॉवल नहीं होगा तो वो कॉन्सोनेंट नहीं होगा, ये सिर्फ वो पीछे वाले वॉल जो है उसकी आवाज को थोड़ा सा लंबा करने के लिए इस्तेमाल होगा। Now this vowel up here in this word, it's always long. और आपको पता है कि जब भी ये जो वॉल हम देख रहे हैं सेरे, ये हमेशा कशम जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है। Always long. So you don't need the yod to tell you that it's long. तो अगर आप योद यहाँ पर ना भी लिखा हो तो तब भी आपको पता है कि ये जो है इसको थोड़ा सा लंबा पढ़ना है। But sometimes you get it. लेकिन आप काफी दफा योद को देखेंगे। But the single dot, which is called a hirik, लेकिन जो ये जो सिंगल नुक्ता है, एक जो नुक्ता है, इसको हम हिरिक बोलते हैं। can be long or short. और ये लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसका
So they write the yod with it to tell you that it's long. और इसके साथ जो है वो योद लिखा जाता है ताकि आपको बताया जाए कि ये लंबा है. And again, we call the combination the vowel plus the consonant name. So it becomes here yod. और इस कॉम्बिनेशन को जो है हम हिरक योद कहते हैं. And the combination is a vowel. और ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक वॉल है. There is no yod there. It's part of this vowel. ये आप ये समझे कि यहाँ पे योद है ही नहीं है, ये सिर्फ उस वॉल की आवाज को जो है लंबा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. Now, this word is by itself. ये जो लफ्ज खुद जो है, So there's no vowel in front of the gimel. और आप देखिए गिमल से शुरू में कोई भी वॉल नहीं है. So therefore it has to have a dagesh. और इसलिए इसके अंदर दागिश जो है वो लाजमी आएगा. आप ये याद रखें कि जो 6 हमने जो लेटर्स देखे हैं जिसके अंदर जो है वो दागिश आता है, और अगर अब वो किसी भी लफ्ज के शुरू में आ रहा है तो उसके अंदर अगर उससे पहले वॉल नहीं है तो फिर दागिश इस्तेमाल होगा. Now, here we have a consonant, a sigol, and another consonant. और आप देखिए इससे आगे जो है एक कॉन्सोनेंट है, मिम, सिगोल है, एक वॉल है, और फिर आप आगे देखते हैं लैमन जो है एक और कॉन्सोनेंट है. Right. So this combination, remember the vowel is pronounced after the consonant. और आप ये याद रखें कि ये जो वॉल है हमेशा कॉन्सोनेंट के बाद जो है वो बोला जाता है. So this is mel. इसको हम पढ़ेंगे मेल. So mem, sigol, lamed. तो मेम, सगोल और लामत को जब हम मिला के पढ़ेंगे In English, M-E-L. तो ये मेल होगा. So this so the word's pronounced gimel. इस लफ्ज का नाम जो है वो गीमल है. Notice the accents on the front. So gimel. देखिए आपको पता है कि वो एक्सेंट जो है वो लगा हुआ है मार. इसको हम उधर हम स्ट्रेस करेंगे तो ये गीमल है. Now, this syllable consists of a consonant and a vowel. अब ये देखें कि ये जो सिलेबल है इसके अंदर एक कॉन्सोनेंट है और एक वॉल है. We call that an open syllable. तो इसलिए हम इसको एक ओपन सिलेबल कहते हैं. Whereas this one is a consonant, a vowel, and a closing consonant. अब ये देखें आगे जो है एक कॉन्सोनेंट है, वॉल है और फिर एक क्लोजिंग कॉन्सोनेंट है. So we call this a closed syllable. तो इसको हम एक क्लोज सिलेबल कहते हैं. This one up here is a closed syllable. अब ऊपर अगर देखें तो वो जो है एक क्लोज सिलेबल. You have the consonant, the vowel, आपके and then the पास consonant. आपके पास कॉन्सोनेंट है, वॉल है और फिर कॉन्सोनेंट है. All right. We'll keep practicing. Who remembers how to pronounce that vowel? आपको किसी को पता है कि ये जो नीचे जो वॉल है इसको किस तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं? Everybody pronounce that vowel. आप बस जिसको भी पता है वो अपना माइक खोले और इसको प्रोनाउंस करें. अगर किसी को इसकी आवाज आती है तो आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. All right. I don't want the name of it. I want to know how to say it. आपने सिर्फ ये बताना है कि इसकी आवाज जो है वो कैसे है. आप उसका नाम जो है चाहे ना बताएं, लेकिन ये बताएं कि किस तरीके से बोला जाए. आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंची बोलिए. All right, well, let's look at this combination. Notice how that stroke goes past the up and down, past the vertical stroke. तो अभी आप इसको देखेंगे, जैसे आपको याद है कि ये जो कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, That tells you, good. ये थोड़ा सा बाहर पीछे की तरफ निकला हुआ है. So this is the dalet, not the resh. तो आप ये याद रखें कि ये दालित है, ये रेश नहीं है. This word occurs by itself. और ये जो लफ्ज जो है ये खुद मौजूद होता है. There, I mean, it's not in a sentence. There's no word in front of it. और आप ये देखें इसके शुरू में कोई भी लफ्ज नहीं है. So there's no vowel in front of this
dalet. और ना ही इसके शुरू में कोई वॉल है, दालित के पहले कोई वॉल नहीं है। So therefore it has to have the dagesh. इसलिए इसके अंदर दागिश का होना जरूर है। Now, the vowel is pronounced after the consonant, और जो वॉल है वो कॉन्सोनेंट के बाद बोला जाता है, and this syllable would be pronounced da. और ये जो सिलेबल है इसको हम डा बोलेंगे, And it's an open syllable, और ये ओपन सिलेबल है, consonant, vowel. कॉन्सोनेंट एंड वॉल। Here we have a consonant, vowel, consonant. और आगे हम देखते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट है, वॉल और कॉन्सोनेंट, So therefore this is a closed syllable. तो इसको हम क्लोज सिलेबल बोलेंगे, And this is let. और इसको हम पढ़ेंगे लेट। But here, this is one of the 6 that takes the dagesh, और आप सबको पता है कि जो ता है वो उसके अंदर जो है वो and ता- it does have a vowel in front of it. और उसके अंदर हम दागिश जो है लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ इससे पहले वॉल आ रहा है इसलिए इसके अंदर दागिश नहीं लगा, So no dagesh. तो इसलिए इसके अंदर दागिश नहीं है। And the combination then with the accent here is dalet. तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ये दालेट है, और जो आपको जो वॉल पूछा गया है वो एक ही हुआ, आखिरी आवाज है, So I'm going to put the accent here. Dalet. दालेट। You have one vowel, और आप देखें आपके पास एक वॉल है, so it's only one syllable. तो आपको पता है जितने वॉल होते हैं उतने सिलेबल होते हैं, तो इसका एक ही सिलेबल है। And aleph is just cutting off the air. और आप ये देखें अलिफ सिर्फ इसलिए लगाया गया कि जब आप बोल रहे हो तो एकदम आप रुकें, So at the end of a word, it's silent. और जब भी ये किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ आता है तो उसकी कोई अपनी आवाज नहीं होती, And so this combination is hey. इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम है बोलेंगे। Notice how this stroke does not touch. There's a gap there. और आप ये देखें कि ये जो गैप है इसके अंदर, ये अगर मिल रहा होता तो ये फर्क एक लेटर था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं मिल रहा तो ये है। That tells you it's the hey and not the het where it touches. और जब ये मिल जाता है तो इसको हम हेल्थ कहते हैं, लेकिन जब ये नहीं मिल रहा होता तो इसको हम हे बोलते हैं। Okay. Vowel, consonant, consonant, vowel, consonant. और अब आप देखिए जो नेक्स्ट है वो है वॉल, कॉन्सोनेंट एंड वॉल। No, we did backwards. Consonant, vowel, Sorry. consonant. कॉन्सोनेंट, वॉल एंड कॉन्सोनेंट, So it's a closed syllable. तो इसलिए ये क्लोज सिलेबल है। And there's that sign again, अब दोबारा देखिए वॉल का साइन कौन सा है, which is an ah sound. तो ये एक आ का साउंड है, So the combination is vav. तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो वाव होगा। Now, in Bible days, that was pronounced as a W, and this would have been wow. लेकिन जब बाइबल के दिनों में या जैसे आजकल हम भी इसको वाव बोलते हैं, But today it's a V sound. लेकिन आजकल जो है इब्रानी जब हम पढ़ते हैं तो इसको वी का साउंड देते हैं, वाव। So, vav. How many vowels do you see? और आप ये देखें कि आगे जो है इसके अंदर कितने वॉल्स हैं, There are 2 of them. आप देखें इसके अंदर 2 वॉल्स हैं, So therefore we have how many syllables? तो आप ये बता सकते हैं इसके अंदर कितने सिलेबल हैं, 2. तो 2 सिलेबल। So this first one और आप पहले वाला देखें is a zayin. तो इसको हम बोलेंगे जाइन। Notice how the head goes past the vertical stroke. तो आप ये देखें कि इसके अंदर वो जो ऊपर वाली जो लाइन है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, That's how you tell it apart from the vav. इसलिए ये वाव से मुख्तलिफ है, And this is a Z sound. और ये जी का साउंड देती है। And with the patak, the short A, और इसके नीचे आप पताक देख रहे हैं, लाइन जो है इसका नाम पताक है, और जिसका जो साउंड है वो जो है वो शॉर्ट ए का है, and it's going to be pronounced za. तो इसको हम जा बोलेंगे। The difference between this vowel and this vowel, they're the same today. We pronounce them the same. और जो ऊपर वाला वॉल आप देख रहे हैं और ये जो वॉल है, इन दोनों को जो है हम एक ही तरीके से बोलते हैं, कमात और
पता, and they're both ah. इन दोनों की जो आवाज है वो आ है. This is technically long and this one is short. लेकिन अब थोड़ा सा फर्क इसके अंदर सिर्फ इतना रख सकते हैं कि ये जो है पता और जो है वो थोड़ा शॉर्ट होती है और कमात थोड़ा सा लंबा होता है. Now we have a yod उसके बाद आप देखते हैं कि योद है with a vowel. लेकिन इसके साथ अपना एक वॉल मौजूद है, So therefore that is a consonant. इसलिए हम इसको एक कॉन्सोनेंट बोले. And we have a closed syllable, consonant, vowel, consonant. और ये एक क्लोज सिलेबल है जिसको हम कॉन्सोनेंट वॉल और कॉन्सोनेंट कहते हैं. And that I is a short I. और ये जो आई जो है ये शॉर्ट आई है. It doesn't have a yod after it like we had up here. और इसके आप देखिए ऊपर जो है इधर कोई भी आपको वॉल नजर नहीं आ रहा, So therefore it's short. इसलिए ये शॉर्ट है. And it would be, this will be yin. तो आपको पता है जो योद की आवाज है वो वाई की आवाज है, तो जब नीचे उसके जो वॉल आ रहा है तो वो उसको हम मिला के सारा जो बोलेंगे तो बोलेंगे येन. And combined, zayin. तो आप देखिए इसके दो सिलेबल हैं, पहले के नीचे जो है वो शॉर्ट एक ही वापस निकालिए जा इन. Don't put an olive there, it's a Y there. Zayin. जायन, So zayin. जायन. Accent on the front. और इसका जो एक्सेंट है आप देखिए इसको एक्सेंट मार्क है ऊपर, तो पहला जो हिस्सा है इसके ऊपर आवाज जो है वो एक्सेंट बोलेंगे And pronounce it with the accent in the front. और उसको प्रोनाउंस भी जो है ना फ्रंट के ऊपर जो एक्सेंट है उससे बोलेंगे. Zayin. जायन. Only one vowel, और एक ही वॉल है इसके अंदर, so only one syllable. तो इसका एक ही सिलेबल होगा. The yod does not have its own vowel, और आप देखिए जो योद है इसके ऊपर कोई वॉल नहीं है, so therefore it's just a vowel letter. तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये वॉल लेटर है. And it's telling you that this is a long vowel. उससे ये बता रहा है कि ये एक लॉन्ग वॉल है That the serif is always long. और जो सिरे है ये हमेशा लंबा होता है. So you will not always have a yod with it. तो आप देखेंगे ये हमेशा जो है इसके साथ योद नहीं होता. Consonant, vowel, कॉन्सोनेंट, consonant. कॉन्सोनेंट, वॉल, कॉन्सोनेंट. So it's a closed syllable. इसलिए ये क्लोज सिलेबल है There's only one syllable. और ये एक ही इसके अंदर वॉल है इसलिए वन सिलेबल होगा ये. Chet. और इसको बोलेंगे खेत. Name of this vowel is ser. और इस जो वॉल का जो नाम है जो दो नुक्ते लगे हुए हैं वो सेरे है. Now, this one, everything's the same except for the first letter. और आप आगे देखें कि ये बिल्कुल एक जैसा लिखा हुआ है लेकिन जो पहले का जो लेटर है फर्क है. So it's a serif with a yod telling you it's a long vowel. और देखिए सेरे है और योद है तो ये आपको इससे पता चलता है कि लॉन्ग वॉल है, Which we call a seriod. इसको हम सेरियोद बोलते हैं. So we have consonant, हमारे पास कॉन्सोनेंट है, vowel, consonant, कॉन्सोनेंट वॉल कॉन्सोनेंट है, closed syllable, क्लोज सिलेबल है. and now it's tit. तो इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे टेट. Here we run into another vowel letter. और यहाँ पर जब आए हैं तो हम देखें मुख्तलिफ वॉल को हम देख रहे हैं. In the same way that the yod told you that that was long, और अभी आपको पता है कि जब भी योद किसी वॉल के बाद लगता था तो उससे ये हमें अंदाजा होता था कि हमें थोड़ा सा लंबा पढ़ना है. this vav is telling you that this is long. लेकिन जब यहाँ पर वाव के ऊपर ये अगर जो नुक्ता लगेगा तो इसका मतलब है कि ये जो है वाव थोड़ा सा लंबा पड़ेगा. Because the name of this vowel is holum, और इस जो वॉल का जो नाम है वो होलम है. and it could be a short O or a long O. और ये ओ जो है ये लंबा भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है. But with the vav, लेकिन वाव के साथ it's a long O. ये लॉन्ग हो. And the vav is not, it's not a consonant. और ये जो वाव है ये कॉन्सोनेंट नहीं है. The combination is a vowel. ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक वाव का कॉम्बिनेशन And we call that a holum vav. और इसको हम जो है होलम वाव कहते हैं. So the combinations are just the name of the vowel and then whatever the consonant is
And the name of it, you just say them together. Cholam Vav. और ये इसको ये जो वॉल है और जब इसको हम कब इकट्ठा पढ़ते हैं जो जो वॉल है और जो कॉन्सोनेंट को तो इकट्ठे को हम कहते हैं कोलम वॉल. And so consonant, vowel, consonant आप देखिए कॉन्सोनेंट है, वॉल है और कॉन्सोनेंट है. is a closed syllable. ये क्लोज सिलेबल है It's just one syllable, और ये एक ही सिलेबल है क्योंकि इसके अंदर एक ही वॉल है. and it's pronounced yod. तो इसको हम पढ़ेंगे योद. So here you have a dalet और आखिर में देखिए आपको दालत नजर आ रहा है preceded by a vowel. लेकिन वो एक वॉल से शुरू हो रहा है. उसके पहले वॉल है, दालत से पहले एक वॉल है. So it does not get a dagesh. इसलिए ये दागिश जो है इसके अंदर नहीं आएगा. Yod. और इसको हम पढ़ेंगे योद. We have one vowel, so one syllable. अभी हम दोबारा देख रहे हैं कि हमारे पास एक वॉल है. इसका मतलब हुआ कि एक सिलेबल है. There is no word in front of this. और इसके शुरू में हम देखते हैं वॉल्स के शुरू में कोई भी और इंसाई लफ्ज नहीं है. So no vowel, so it must have a dagesh. और इसके आगे कोई जो है वो वॉल ना होने की वजह से इसके अंदर दागिश आएगा. And it has the short A. और ये इसका जो नीचे जो वॉल लिखा हुआ है इसकी आवाज जो है वो छोटे एक ही आवाज होती है. And then it has the pe sofit. और ये जो पे सुफीत है उसकी जो फाइनल फॉर्म है पे की. This one is preceded by a vowel. और आप ये देखें कि ये एक वॉल्स के बाद आ रहा है. So no dagesh. इसलिए हम इसके अंदर कोई दागिश नहीं लगाएंगे. No vowel, dagesh. Vowel, no dagesh. आप देखिए उल्टा है. जब वॉवल ना होगा तो दागिश आएगा, लेकिन जब जो है वॉल होगा तो दागिश नहीं आएगा. And this combination, the name of this letter is kaf. और इस जो लेटर का जो नाम है वो काफ है. Remember, the patak and the kamats are pronounced the same. और आपको मैंने अभी जैसे पता है कि जो पताक है और कमात्स है इसको हम तकरीबन एक तरीके से बोलते हैं. In biblical times, the kamats would have been pronounced longer than this one. This would have been ah, and this would have been ah. लेकिन मसीह के ज़माने में जो है इसके अंदर फर्क था. जो कमात था इसको हम थोड़ा सा लंबा बोल देते, आह बोल देते. Accent mark. और हम देखते हैं कि एक्सेंट मार्क हमने देखा. So consonant, vowel. आप देखिए कॉन्सोनेंट और वॉल है. Now, how do I know that this consonant is not closing that syllable? और आप ये देखिए कि ये जो कॉन्सोनेंट है ये क्लोज क्यों नहीं है. Why do I know it's opening this syllable? आपको कैसे पता चल रहा है कि वो आगे वाले सिलेबल को जो है वो ओपन कर रहा है? Because it has a vowel. क्योंकि आप एक वॉल को देख सकते हैं. Every syllable in Hebrew and in Aramaic हर सिलेबल जो अब्रानी में और अरामी में है has to begin with one and only one consonant. तो उसको शुरू होने के लिए एक और सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट की जरूरत है. And must have one and only one vowel. और उसके अंदर एक और सिर्फ एक ही वॉल होना जरूरी है. So I have a consonant and a vowel at the beginning of the word. आप देखिए कॉन्सोनेंट है और वॉल है. So I know that starts the syllable, and I know the mem is not closing the syllable because it has a vowel under it. और आपको नजर आ रहा है कि अगर जो है मेम जो है वो क्लोज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसके नीचे जो है वो एक वॉल है. If it were closing this syllable, then this vowel would be starting the next syllable, and you can't begin a syllable with a vowel. और आपको पता है कि कोई भी सिलेबल है और वो वॉल के साथ आप शुरू नहीं कर सकते. So la, तो पहला जो है वो ला है. and then consonant, vowel, consonant, so it's a closed syllable. और आपको नजर आ रहा है कॉन्सोनेंट है, वॉल है और कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्लोज सिलेबल है.
and it's pronounced med. और इसको हम पढ़ेंगे med. So la med. तो ये ला med है. This is one of the 6 letters. It has a vowel in front of it, so it does not get a dogesh. और ये देखें कि ये वही 6 हिस्से हैं जिनको बैकफेट कहते हैं. तो अगर वॉल आ रहा है तो दागिश नहीं आएगा, लेकिन अगर वॉल ना हो तो दागिश आएगा. Lamed. इसको हम लामिद बोलेंगे. Here we only have one vowel, आगे आप देखिए आपके पास सिर्फ एक वॉल है so therefore only one syllable. और सिर्फ एक सिलेबल है. And the yod does not have a vowel sign. और आप देखिए योद जो है उसके नीचे कोई भी वॉल आपको नजर नहीं आ रहा. That tells me it's not a consonant, but it's just telling me that that vowel is long. तो ये जो है ये मुझे ये बता रहा है कि योद के नीचे अगर जब कोई भी वॉल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्सोनेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो सिर्फ जो वॉल की जो आवाज है उसको लंबा कर रहा है. We call that a vowel letter. और इसको हम वॉल लेटर कहते हैं. And a seriod is a vowel. और ये सेरियोद है ये वॉल. So consonant, vowel, consonant. So the consonant, vowel और consonant. Therefore, closed syllable. इसलिए ये closed syllable है. क्यों? कि consonant से शुरू हो रहा है, फिर vowel आ रहा है, और फिर consonant. And this is the mem when it's not at the end of the word, and that's a mem at the end of the word. और आप देखिए आपको mem नजर आ रहा है दोनों जगहों पे. एक लफ्ज के शुरू में है वो मुख्तलिफ तरीके से लिखा हुआ है, और फिर उसी को हमने लफ्ज के आखिर में लिखा है तो उसको मुख्तलिफ तरीके से लिखा है. Maim. इसको हम पढ़ेंगे maim. Here we have the noon at the beginning of the word, or noon at the end of the word, and a noon not at the end. और आप देखिए दोबारा आपको क्या नजर आ रहा है कि एक लफ्ज के आखिर में आपको नून नजर आ रहा है और एक जो है वो आखिर में नहीं है. तो दोनों मुख्तलिफ तरीके से लिखे हुए हैं. A single dot और जो उसके बाद आप देखिए एक दुक्ता नजर आ रहा है with a vav वाव के अंदर. is a vowel. तो ये एक वाव. It looks like a dogesh. आप इसको समझ लोगे ये दागिश है, लेकिन जब भी वाव के अंदर जो है वो नुक्ता आएगा तो वो एक वाव के अंदर जो नुक्ता आएगा तो उसको हम जो है वो वॉल जो है. Said a lot. Huh? You said a lot. No, because I said something different than that. Okay. So this combination is a vowel. और ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम वाव बोलेंगे. And this one actually has its own name. और इसका एक अपना नाम भी है. The name of this vowel is a shuruk. और इसका जो नाम है वो शुरिक है. And it's an oo sound. और ये ऊ का जो साउंड है वो देता है. And it is a long vowel. और ये लॉन्ग वाव है. So we have consonant, vowel, consonant, so it's a closed syllable. और ये कॉन्सोनेंट वाव कॉन्सोनेंट ये क्लोज सिलेबल है. It's noon. इसको हम बोलेंगे नून. Now we introduced this sound a couple weeks ago. We talked about it. और जो कुछ हफ्ते पहले हमें ये साउंड को भी पढ़ा. And the two vertical dots, और जब जो दो नुक्ते जो है वो जब एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे जाएंगे as opposed to horizontal, और पहले हमने इसको पढ़ा कि वो जो है वो लेटे हुए हैं. this one sign has two different values. और आपको ये जो साइन नजर आ रहा है इसके दो मुख्तलिफ जो है वो वैल्यूज हैं. Sometimes it means no vowel, कभी हम इसको बोलेंगे नो वॉल, and sometimes it is a vowel. और कुछ दफा जो है ये एक वॉल है जो का साउंड देगा. The rules for that are not very complicated, और इसके जो रूल्स हैं वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है. and we'll go over them again, हम इसको दोबारा देखेंगे पढ़ेंगे, but not right now. अभी नहीं. But I'll give you two simple ones. लेकिन मैं दो जो है आपको बहुत सिंपल बातें बताना चाहता हूँ. If you have this, the name of this sign is schwa, और ये जो नाम है जब ऊपर नीचे दो नुक्ते लिखे होंगे तो उसका जो नाम है वो श्वा है. if you have a schwa at the end of a word,
और जब एक लफ्ज के आखिर में आप शुवा देख रहे होंगे, it means no vowel, it's silent. और इसका मतलब होगा कि कोई वॉल नहीं, ये बिल्कुल साइलेंट होगी, इसकी कोई भी आवाज नहीं होगी, साइलेंट वॉल शुवा है। If you have a schwa at the beginning of the word, लेकिन आपको यही शुवा एक लफ्ज के शुरू में नजर आए, it's a vowel, तो तब ये वॉल है, and it's तो इसका साउंड होगा और वो होगा का साउंड। but we don't have that here. We only have the silent schwa. लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो शुरू में नहीं नजर आ रहे, तो यहाँ पे ये साइलेंट इसलिए कि यहाँ पर, So there's only two vowels in this word. और आप ये याद रखें कि यहाँ पर सिर्फ दो वॉल हैं इस लफ्ज के अंदर, And so there are two syllables. और दो ही सिलेबल होंगे। We have the samic तो इसको हम सामिक, with a kamat, इसके साथ कमात है, and that combination is sa, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम सा बोलेंगे, not sa, sa. सा। There you go. And then a mem with a sagol and a final kof, और मैम सगोल और फाइनल कॉफ, closed syllable, consonant, vowel, consonant, और ये क्लोज सिलेबल है, कॉन्सोनेंट वॉल कॉन्सोनेंट, pronounced mech. और इसको हम बोलेंगे मैह। This consonant, the cough, final cough, और ये जो कॉन्सोनेंट है जिसको हम फाइनल कॉफ बोलते हैं, when it's at the when it does not have a vowel, has to have the silent schwa written over it. और जब इसके पास वॉल नहीं होगा तो इसके आखिर में जो है वो साइलेंट जो है शबा होना। Whereas any other letter at the end of the word does not get the silent schwa. और आप देखिए बाकी जितने भी हैं इसके अंदर आपको कहीं भी जो है वो साइलेंट शबा नजर नहीं आ रहा। It's just an odd thing about that one letter at the end of a word. और ये जो एक और चीज है तो इसी लेटर के बारे में। So the name of the letter, this letter, और is Samech, और इस लेटर का जो नाम है वो सामेह है, with the accent on the front. और इसका जो एक्सेंट है वो आप देख रहे हैं कि फ्रंट में है, Samech. सामेह। Very good. Two vowels, जो दो हैं वो वॉल्स आपको नजर आ रहे हैं, therefore two syllables. दो सिलेबल हैं, This is the patah, और ये पताह है, which is a short A. It's an ah sound. और ये शॉर्ट ए और आ का साउंड है। And then we have a herik. Sorry. No, that's right. Herik उसके बाद आपको हेरिक नजर आ रहा है, does not have a yod written after it. और आप देखिए इसके बाद कोई योद नहीं लिखा हुआ, No yod there. यहाँ पर आपको कोई योद नहीं नजर आ रहा, बल्कि योद के नीचे हेरिक लगा हुआ है, So therefore it's a short vowel. और इसलिए हम इसकी जो है वो शॉर्ट आवाज होगी। And this yod has a vowel, so it's a consonant. इसलिए अभी हम देख रहे हैं कि योद के नीचे एक वॉल है, इसलिए ये वाला जो योद है वो कॉन्सोनेंट है, वो किसी वॉल का हिस्सा नहीं है। So we have the open syllable ah, हमारे पास ओपन सिलेबल है जिसको हम आ बोलते हैं, and then we have this closed syllable yin, और उसके बाद हमारे पास क्लोज सिलेबल है येन, and then pronouncing them together and putting the accent on the front, ayin. और जब हम इनको इकट्ठा पढ़ेंगे और शुरू में इसके ऊपर हम जो है थोड़ा जोर लगाएंगे तो ये होगा आयन। One vowel, नीचे आप देखते हैं कि एक वॉल है, so one syllable. एक सिलेबल है, The pay does not have a vowel in front of it, so it got the dagesh. और जो पे है इसके फ्रंट में कोई वॉल नहीं है तो इसके अंदर एक दागिश मौजूद है, इसलिए And the sere is an A sound, और अब सर्रे का जो है वो ए साउंड है, so pay. तो ये है होगा। Two vowels, दो वॉल्स हैं, two syllables. दो सिलेबल हैं, But notice this yo does not have a vowel sign. लेकिन आप देखिए दोबारा योद के नीचे कोई वॉल नहीं है, So it's a seriod. इसको हम सेरे योद बोलेंगे, तो ये उसका वॉल का हिस्सा बन गया, The combination is a vowel name. और ये जो कॉम्बिनेशन है ये वॉल का वजह से है। So we don't say seri pause yod, we say seriod. हम इसको ये नहीं बोलेंगे सेरे योद, बल्कि हम इसको सेरे योद बोलेंगे, इकट्ठा बोलेंगे। So both are open syllables. Around Consonant vowel, consonant vowel. और आप देखिए कि दोनों जो है ये ओपन सिलेबल है, ये कॉन्सोनेंट है और फिर वॉल है। अगर आगे कॉन्सोनेंट होता तो ये क्लोज हो जाता,
लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट नजर आ रहा है और वॉल नजर आ रहा है, इसलिए ओपन है। उसके बाद जो है हमें जो है वो दालत नजर आ रहा है और फिर जो सॉरी और उसके साथ जो है हमें सॉरी कॉन्सोनेंट और फिर वॉल नजर आ रहा है। And since the yod's not a consonant, but the part of the vowel, this is just a consonant and a vowel. और जो जो योद है दोबारा वो कॉन्सोनेंट यहाँ पर नहीं बल्कि सेरे का हिस्सा है, So, sade. तो इसको हम बोलेंगे सा दे। We've seen this combination before. हमने ये कॉम्बिनेशन पहले देखा था, A holum vav. इसको हम बोलते हैं होलम वॉल। And that's just telling you that's a long holum. और आपको ये बता रहा है कि एक लॉन्ग होलम है So it's a long O. और ये लॉन्ग ओ है And it's consonant, vowel, consonant. और ये कॉन्सोनेंट वॉल कॉन्सोनेंट है, So it's a closed syllable. क्लोज सिलेबल है। The pay has a vowel in front of it, so it did not get a dog age. और जो पे जो है इसके शुरू में एक जो है वो वॉल मौजूद है, इसलिए इसके अंदर कोई दाबिश नहीं आएगा। And so, kof. इसको हम बोलेंगे कोफ। Seriod. सेरियो आपको दोबारा नजर आया, So one vowel, one syllable. एक वॉल है और एक सिलेबल है। So consonant, vowel, consonant. Did I already just say that? Resh. तो ये कॉन्सोनेंट वॉल कॉन्सोनेंट आपको नजर आ रहा है, तो ये रेश। और जब भी कॉन्सोनेंट वॉल कॉन्सोनेंट होता है तो क्लोज सिलेबल होता है। The dot is on the left, और जब लेफ्ट के ऊपर डॉट होगा so that tells me it's a sin. तो ये सेंथ होगा। We have a heric yod. और नीचे में फिर दोबारा हेरिक योद नजर आ रहा है, The yod's telling you this heric is long. और ये योद है वो यही बता रहा है कि ये जो वॉल है वो थोड़ा सा लंबा है। Because remember, this one did not have a yod after it. There's no yod there, so that was a short heric. और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोबारा आपको योद नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये शॉर्ट होगा। This one has a yod, so it's a long heric. और ये यहाँ पर आप देखें कि आपको जो है वो योद नजर आ रहा है, तो ये योद लंबा होगा। Closed syllable, consonant, vowel, consonant. और ये कॉन्स्टेंट वॉल कॉन्सोनेंट है, तो ये क्लोज सिलेबल कहलाएगा। And the long heric is E, seen. और ये शीन होगा, No, seen. सीन। Same thing, but the dot's on the right. और इसी तरह दोबारा हम देखते हैं कि डॉट जब है ऊपर वाला वो राइट पे चल जाएगा तो आवाज तब्दील हो जाएगी, So sheen. तो ये शीन होगा। Kamat. और कमात से नजर आया हमें दोबारा। The vav here is a consonant. और ये जब इसके बाद जो वॉव है ये कॉन्सोनेंट है, There's no vowel in front of the tub, so it got the dog age. और आप देखते हैं कि वो जो है ताव के पहले कोई वॉल नहीं है, इसलिए इसके अंदर हमने दागिश लगाया, So tav. तो ये ताव। Okay, it's 9:30. अभी जो है 9 साढ़े 9 बज गए हैं So हमारे यहाँ पे।